been over there, so I've been jet lagged and I've done it. यहाँ से कम किया है सर टेप Yes, I can hear you. Would this be the level at which you would be speaking? Would this be the level at which you would be speaking? So, can you speak a little louder? Because it's a tax. Gurbad, you said Gurbad. That's a safe word. I can hear you very faintly, so if you speak into the mic, I will have no idea. Seriously, on there. Ashok, audio. Yeah. अरे नहीं, वो गिर जाएगा तो दिक्कत है. I can, yeah, now I can hear you. नहीं, ये मैंने वॉल्यूम फुल में रखा है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे कम सुनाई दे रही है. Can you speak something for about a minute? Just keep going, keep going, keep going. Yeah, awesome. This is perfect. Thank you.
The Proteas prepare for the Afghan challenge. Hello and welcome. You're watching The Narrative, a T20 World Cup special brought to you by Times of India. This is the first semi-final as two teams clash in Taroba. I'm Suhaas Vedham, joined by Mr. Saba, Karim and Mr. Vijay, Dahiya, our very charismatic keeper duos as always. Thank you so much for being with us in The Narrative. We'll start with Saba, sir. Saba, sir. Two teams which met each other 15 years ago, completely different complexion, especially when it comes to Afghanistan, now at it once again. Yes, and hats off to Afghanistan, the way they have played in this entire World Cup. The campaign has been extremely, I would say that they've been they've played entertaining cricket, but at the same time, they've really been geared up to do well. And I think they've found some new players who have done quite well for them. There are the so-called experienced players, and all of them have put their hands up and they have delivered at the right time. So I think this is going to be an exciting contest. And somehow I get this feeling that on track like this, Afghanistan is not an underdog at all. They have reached here because of their credentials, because of the kind of talent they have shown, and they may be the favorite here to win this encounter. All right. Yeah. Wins the toss and chooses to bat first. Does Rashid Khan? Your thoughts on that first step? I think absolutely right decision as far as the team is concerned, and this venue. Not a lot is scored on this venue, a lot of low-scoring games, and that's maybe another reason. Big game, South Africa's record in ICC tournaments and especially in knockouts are not really good. Yeah. I think they want to put that extra pressure on them, and having that threat that they have really good spinners, or let's say a fantastic bowling unit as far as Afghanistan is concerned. So they're doing the right thing by batting first, and then testing the South African side with their spin and two fast bowlers who can bowl a lot of cutters and a lot of slow ones. We have amazing bowling unit. Both of them, and if you look at their numbers in Super 8, best bowling unit. Economy rate as far as South Africa is concerned, 6.1. Afghanistan is 6.8. That's how beautifully they have bowled in these Super 8. So I think Afghanistan, as far as them is concerned, plan is absolutely clear. Put runs on the board and test the South African batting unit. You're happy what they need to do is to get out of this euphoria of qualifying for the semi-finals. You know, because the kind of celebration one could see, at times you tend to get carried away because the work is not over. Right. I mean, since they have made the journey so far, the journey will be complete if they win this World Cup. And I think they have the right kind of team to do that. So I hope that they recover from this very quickly and they're really up for the semi-final. Absolutely. Let's go to Squads Up and find out the playing 11 especially that these two teams want to sport come the big day. Happy news for Afghanistan. Rahmanullah Gurbaz would be keeping wickets, it says, and Rahmanullah Gurbaz was nursing an injury. But of course, if they have someone so talented for a physiotherapist who could say, Naib, don't worry about Gulbuddin Naib, you would be fine in just 15 minutes. Rahmanullah Gurbaz still had time not even to recuperate. Well, right now he's supposed to bat first, so I think it'll take some more time, so which is good for Afghanistan. But I don't see too many changes in the lineup. We have talked about the spinners. They have Noor Ahmed, they have Rashid Khan, and then Mohammad Nabi. I think he's been there for so many years now. Is still doing his bit. The batting is heavily dependent on Ibrahim Zardan and Gurbaz, so they will be hoping that these two could come good. Gulbuddin Naib has been very handy with the ball. He's been able to pick wickets, and I think Dwayne Bravo, as the bowling coach, has done some tremendous work. Yes. Naveenul Haq, we see a different kind of a bowler now. Fazal Haq Farooqi in good form. They have a well-rounded bowling attack, but I think at this stage they need to put at least, I would say, 140, 145 on board. All right, and yes, go ahead. I'll just add on what Saba just mentioned about these two openers. They've been phenomenal. If you look at the number of runs they have scored, 300 in partnership in this tournament, all batting first. That's another reason why Afghanistan chose to bat first. Their number is completely different there when they have batted first and then they have chased. If you look at the amount of number, they have scored almost 65% of the runs that the Afghanistan batting unit has scored. These two openers have contributed 65% of those runs. And Gurbaz, another reason why Gurbaz is so important, you just mentioned about his injury. He's man in form. He's somebody who's so confident. He's somebody who gives them that kind of start in first 6 overs. Ibrahim Zardan takes a little bit of a time, but not Gurbaz. So he's the one who's going to be very, very important for Afghanistan side. क्या उनके कीपिंग में असर पड़ सकता है जितनी स्क्वाट्स वो करेंगे पहले?
कीपिंग में असर पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में फिजिकल साइड बिल्कुल अलग है। आज सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ का मुकाबला है, किस तरीके से यहाँ पे आप हैं। और एक और चीज़ है ना, पहली बार एक नया फाइनलिस्ट देखने को मिलेगा इन दोनों टीमों की तरफ से, जो भी पहुंचता है वो एक चीज़ होगी। साउथ अफ्रीका यहाँ पर काफ़ी बार पहुंच चुकी है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप देखें जिस तरीके की क्रिकेट वो खेली है, उनको एक हर्डल और ये सोच रहे होंगे कि इसके पार किस तरीके से जाएं। अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस होगा, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर बांग्लादेश को जिस स्थिति से उन्होंने हराया, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा बेस्ट चांस है। तो ये सारा मुकाबला मुझे लगता है स्किल एक तरफ है और मेंटल स्ट्रेंथ का एक तरफ है कि हाउ बैडली यू वांट दिस, वो सारा वहां पर आके रुकेगा मामला आज। राइट, साउथ अफ्रीका की तरफ एक नजर। साउथ अफ्रीका 11, I mean, fairly unchanged. Aiden Markram, captain, has been good in terms of captaincy. Are you happy with him as a captain? Yes. Oh yes, I think he has done quite well. I think they finally, I feel they have the combination to do well on these kind of tracks. वो उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उनके पास भी 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, केशव महाराज, तब्रेज़ शम्सी, both of them wicket taking bowlers. Their bowling attack, it consists of Rabada, then they have Marco Jansen, that height and the kind of experience he has gained. The biggest factor, I think, on a game like this against top quality spinner has to be Henrik Larsson, because I feel I rate him as the number 1 batter against spin bowlers, because he's so devastating against spin bowlers. So I think मुझे लगता है कि उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर इस समय चूँकि वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। पर हेनरिक क्लासन को रोकना बहुत ज़रूरी होगा, राशिद खान एंड कंपनी को। अगर हेनरिक क्लासन ने फॉर्म पकड़ लिया, अभी तक फॉर्म उनका आया है, ज़्यादा मौका उनका मिला नहीं है, पर जितनी देर भी वो बैटिंग करते हैं उनका स्ट्राइक रेट हमेशा बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है और बहुत ही वो डेंजरस साबित हो सकते हैं आज के मैच में भी। और ख़ास क्यों है क्लासन के, अगर हम बारे में बात करते हैं ना, मे बी डिविलियर्स के बारे में भी बात करते थे, वो क्यों खास थे? ये स्पिन जितना बेहतरीन खेलते हैं ना एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर होने के बावजूद, आई थिंक वो इनकी बहुत ही बड़ी खासियत है। और जिस तरीके से स्पिन के खिलाफ इनके पास शॉट्स हैं, आप देखिए बहुत कम जोखिम उठा के ये बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स खेलते हैं, ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, क्रीज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, गहराई का आगे नहीं जाने का, वो इनको बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं। और इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा डोमिनेट करने की है। वो एक चीज़ है जो औरों से खास आपको बनाती है। आपका सवाल माकरम से शुरू हुआ था कि आप खुश हैं। कप्तान के रूप में हो सकते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में नहीं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं इस टीम के। उनकी अगर आप औसत देखेंगे तो 16 से भी कम की है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। टेक्निकली सबसे स्ट्रांग बल्लेबाज हैं इस टीम में, और जब आप ऐसे पिचेस के ऊपर खेलते हैं तो आप उस बल्लेबाज की तरफ देखते हैं जो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उनका रन बनाना बहुत ज़रूरी है। इस टीम के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका योगदान ऐसे पिचेस के ऊपर आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका से होगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो पिछले कुछ समय में रहा है, क्लासन हो, स्टब्स जिस तरीके से आए हैं, मिलर स्पिन बढ़िया खेलते हैं, लेकिन इस टीम में राशिद के खिलाफ 4 बार आउट हुए हैं, वो एक दिक्कत हो सकती है उनके लिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही है, क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके से पहले 6 ओवरों में बल्लेबाजी की है ना, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया है। पहले 6 ओवरों में 168 के आसपास का है, तो वो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट आपको देते हैं, लेकिन गेंदबाजी पहले अच्छी करनी होगी। और मेरी नज़र सबा भाई ने 2 स्पिनर का जिक्र किया, लेकिन नोकिया के ऊपर रहेगी, जो पेस उनके पास है। और इस साउथ अफ्रीकन टीम को अगर स्पिन नहीं तो आप पेस से बिल्कुल परेशान कर सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है। अगर पहले 6 ओवरों में आपने 1-2 विकेट जल्दी अच्छे पहले निकाल दिए, तो फिर साउथ अफ्रीकन टीम इस टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। फील्डिंग एक और चीज़ होगी जो साउथ अफ्रीका की नज़र हमारी रहेगी। वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में हमेशा उसने उनको लेट डाउन किया है। आज देखते हैं, मुझे लगता है कि फील्डिंग का के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जो अब भारत ने क्या किया पिछले मैच में, हमारी फील्डिंग इतनी अच्छी रही, कैचिंग इतनी अच्छी रही कि हमने मौका दिया नहीं ऑस्ट्रेलिया को टीम मैच में वापस आने का। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। नोकिया, जैसे कि विजय ने कहा, ये शानदार, उनको अच्छे फॉर्म में है, विकेट्स लिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि उनके पास रिसेप्शन है, उनके पास गति है, उस हिसाब से वो तंग कर सकते हैं। पर अफगानिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया मौका, और ये बहुत ही शानदार ये कहानी है जो अभी तक रची गई है, और इसका अभी भी अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है वो अंत भी बाकी है। अगर अंत अच्छा हो गया तो और भी मज़ा आने वाला है इस टूर्नामेंट में। अब वो अंत अच्छा आपके हिसाब से, अगर वो फाइनल जीत गए तो? हाँ, यही तो हो सकता है, बिकॉज अब तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए दिस इन दिस सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। Right. And you know what? When the experts were asked who the semi-finalists are going to be before the tournament even began, there was a certain gentleman called Brian Charles Lara who said, "I rate Afghanistan very highly. Be prepared to be surprised." And today, what better than
Afghanistan playing a semi-final against South Africa in a ground that's named after Brian Charles Lara. The Prince. Serendipity. Yeah, absolutely. I think it would be such a great feeling. I think for Afghanistan to play in such a historic stadium, historic in the sense because we named after Brian Lara, but for Brian Lara to think and to foresee that Afghanistan will do well, all that has been a wonderful coincidence. And I think Afghanistan would love to. They have already done that. They've proved him correct, but they need to go forward. And I think they need to get out of this entire thing and try and focus. But I really feel that if Afghanistan can get to about 135, 140, we are in for a humdinger. Wow, and the word minnow seems to be erased little by little when it's used with Afghanistan. Do you think chokers as well a tag that you don't want to see with South Africa? Oh, absolutely. As far as minnows are concerned, I think in this format, white ball format, I think they have passed that. They have done that many a times. They have beaten teams, better teams, so-called better teams in ranking and everything on consistent basis. And I think that the kind of cricket that they play, the brand of cricket that they play, and then you associate that brand of cricket with white ball, I think they're at par. They're up there. They have what it needs. I think if their batting unit comes to the party more regularly, they can be a force to reckon in this format. South Africa, unless until they win anything big, that choker tag will be next to their name. Unfortunately, they have earned it. They only have to get rid of it. All right. Remember, both these teams haven't experienced the air of a final, but this is going to be great fun in the semi-final. Now, Tarouba as a ground, ज़्यादा वाकिफ होंगे अफगानिस्तान इस ग्राउंड से क्योंकि उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेला था इसी ग्राउंड पर, लेकिन साउथ अफ्रीका पहली बार यहाँ पर लैंड हो रही है. मैं थोड़ा पिच रिपोर्ट देख रहा था. सुहास, पिच रिपोर्ट में है कि पहले बल्लेबाजी करने के लिए सभी का ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए. थोड़ा बहुत टफ ग्रास है. इसका मतलब है कि थोड़ी मेहनत करनी होगी बैटिंग करने के लिए. अफगानिस्तान चूंकि यहाँ पर खेल चुकी है, उनको अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो हो गया होगा, पर अंत में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की तैयारी ज़्यादा कुछ निर्भर करती है उनके फर्वर के ऊपर, वो किस जोश के साथ मैदान में उतरते हैं. और उनको ये यकीन है कि वो किसी भी टीम को वो हरा सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात होती है. अगर एक ऐसी टीम जो अभी भी इमर्ज कर रही है, उनको ये विश्वास अगर हो जाता है कि वो मैच जीत सकते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ भी, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होती है. तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की तैयारी कुछ हिसाब से ही रहेगी आज के मैच में, और इसीलिए ये दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. एक ऐसी टीम को रोकना जो इस समय ना ही उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है, पर उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है, उनके अंदर जो जोश है, वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त. इसके बारे में भी बातचीत करेंगे स्टोरीज ऑन द साइड्स में, क्योंकि अफगानिस्तान खुद एक कहानी है. Oh, what a story this is. Afghanistan. Many of the cricketers who find themselves amidst all this in the World Cup picked up the bat for the first time in a refugee camp, were fighting for something else, and today representing their country. Especially one man who's been through the highs and lows of Afghanistan cricket from Division 5 to where he is today, Mohammad Nabi. Is there a sense of let's do it for Nabi as well amongst the youngsters of Afghanistan, you could say? Definitely. I mean, like what he's done. And when you talk about his presence in that dressing room, there are a lot of people sometimes say that he's done for that side, but his stature is so big. I'll tell you, one of the tournaments where Afghanistan didn't have enough money to participate, he paid all the expenses from his pocket. Oh, I see. Okay. He's that kind of stature. He holds that kind of stature as far as Afghanistan cricket is concerned, and you know, people look up to him. These youngsters look up to him, and the most important guy who look up to him is Rashid. When your captain is looking up at a senior guy, rest follows him. He's phenomenal. His presence is phenomenal. His contribution is top class, and you can say that. I mean, like, you know, there are a lot of teams have talked about it when they're playing a big tournament. I remember Sachin Tendulkar having a chat with Yuvraj Singh, and before the World Cup started in 2011, he said, "Play this for someone." And Yuvraj has said that I'm playing this for you. Oh, okay. I mean, like, there definitely be a talk in that dressing room that we are playing for Nabi. They're making another cause by saying that this is the man who's done so much for our cricket. Let's do it for him. Yeah. Finding an extra edge or finding an extra motivation by saying this. But as far as him is concerned, I think what a journey from where he started and where he sees his team right now, and I think it's difficult for him to leave it right now. That's another reason he's just carrying on for. But what a moment for somebody like him, that, like you just mentioned, that journey started, and now having that belief
that we can get into the World Cup final. Just Right. imagine World Cup final. Phenomenal. His son is playing under 19 of Afghanistan, Yes. isn't it? So maybe he's waiting for him to get into the national side. But this is a great time for the rest of the What a story that would be, though. Afghanistan players to win this World Cup for Mohammad Nabi. He's been around, as Vijay rightly said, for a number of years, and I think he's been instrumental in this turnaround which we see now in Afghanistan cricket. You know, the other thing which I find remarkable for Afghanistan is they have this global appeal. Because so many of Afghanis they live outside Afghanistan now, and they are spread all across the world. So I think that is why, and most of them live like refugees. Right. So it's not been an easy journey for them, but still the kind of support they get is because of as you rightly said, it's the story that has been woven around this entire cricket side. And one more thing I will add. This is such a big landmark, or such an opportunity to say that we come from Afghanistan when you're somewhere else in the world, and you say our cricket team, you can associate. I've seen so many people, Indians in other countries, when you talk about India, said, yeah, we're the world champions, we play cricket, or we dominate cricket. That becomes your identity. And I think this is another thing, that when their team is doing so well, a lot of people feel that pride, that joy, and that identity, that, you know, we come from that Afghanistan who's doing so well in sports. Brilliant. Cricket as a vehicle to bring back perhaps peace economically, politically. There are a lot that Afghanistan's going through, but cricket it's been a beacon of hope, and I really hope that it can be an all-Asian final, because you know the other team that I'm supporting. Let's move on to Quinton de Kock, because he's been scoring the bulk of the runs, but Reza Hendricks had been struggling. How difficult is it to maintain your rhythm when your partner is struggling? Not with Quinton. I've seen him. I've Okay. worked with him. I've spent a lot of Yes. time with him. I think his strength is his mental makeup. Okay. He never let the environment or what's going on the other end take control of his actions. I think he's somebody who will go out there and just play his natural game from the ball one, and this is what is required. The other thing is, sometimes, you know, he's a stroke player. The way he plays, most of the time you feel, wow, there was no need for you to play something like that. But this is what you're going to get with Quinny. That's the kind of player that he is. But he's not going to get overawed, or he's not going to feel any pressure by what's happening on the other end. Or you can say the pressure is on Hendricks. The way he's been playing so far, he's somebody who's been rated very high in South African cricket. Right. They feel he's a very good player. Not only against the fast bowler, against spin as well, but he's not got that kind of start. Maybe this can be the game that he's been waiting for. All right. Both these players, de Kock and Henrik Klaasen for that matter, they've got an excellent track record against Afghanistan spinners. High strike rate above 200, which means Right. that they have always tried to remain aggressive against the spinners, and I think Correct. that's what they will try to do. And hence there is always an opportunity for Afghanistan to pick up wickets. But I think Quinton de Kock, he holds a massive key now. As you rightly said, I think with Reza Hendricks struggling at this stage, I think it is Quinton de Kock who has to play with more responsibility. But I think Aiden Markram, and then as a captain, as a batter, he hasn't scored runs. He needs to come good. David Miller at times has struggled against spinners. So I think there is some kind of fragility in this South African batting lineup. But do you think that's being compensated with the kind of team they're playing today as well? क्योंकि up top runs बन रहे हैं अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि वो बल्लेबाजी पहले करेंगे टॉस जीत के, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी स्ट्रगल कर रही है. भले आप ये कह लें कि यहाँ सभी के सभी फ्लोटर्स हैं, नबी 3 पे भी आ सकते हैं, 5 पे भी खेल सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रही है. बल्क ऑफ द रन्स इज कमिंग फ्रॉम अप टॉप. बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं और इस फैक्ट को आप हाइड नहीं कर सकते ये कह के कि ओपनर्स बहुत अच्छे रन बना रहे हैं. ओपनर्स जिस दिन रन नहीं बनाएंगे उस दिन आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे. आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि फ्लोटर है, कोई कहीं भी आ सकता है, पर क्या उतनी काबिलियत है? आप हर टीम के बारे में बात करते हैं, फ्लोटर्स तो किसी भी टीम में हैं, पर क्या उनमें उतनी काबिलियत है, या क्या उन्होंने उतने रन बनाए हैं पीछे से जब उन नंबरों पे उनको खेलने के लिए मिला हो? तो वो एक ज़रूर चैलेंज रहेगा. और वही साउथ अफ्रीका की टीम इस बारे में सोच भी रही होगी कि अगर हम जल्दी विकेट लेते हैं पहले 6 ओवरों में, वो जो ओपनर्स हैं, और आप ये देखिएगा गुरबाज खेलेंगे एक ही तरीके से. आप ये नहीं सोचिएगा कि गुरबाज कुछ बदलने वाले हैं. जैसे भारत के खिलाफ खेले थे और आउट हो गए थे. So you're expecting him to take on an Anrik Nokia, Kakiso Rabada, everybody. He will do that, and that's even the way, Marco Jansen in the power that's the play. way he's been playing so far. That's the way he's been playing in wherever he plays,
any T20 league, and that's the reason why he's right up at the top. And you don't expect him to change just because it's a big game. I think he's going to go out there and try and put pressure on this South African bowling unit, who's been absolutely phenomenal. We don't know how much he's recuperated, but the physio thinks he's good enough to be out there. And if it's a knee injury that he's nursing, he wouldn't want to run around. He would probably want to make sure that the fielders go for the big shots as soon as possible. Let's move on to the extra yard and find out what our experts have to say. Saba sir, predictors hat on. Oh God. Power play score, Afghanistan batting first. गुरबाज इब्राहिम जादान जिस तरह से बैटिंग करते आ रहे हैं, पेस बॉलर्स ऑपरेट करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. दैट मींस दे कैन इजीली गेट टू अबाउट 130 135. अगर वहां तक पहुंच गया तो फिर अफगानिस्तान को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए. Because they defend well, perhaps 135 to 145. Saba sir says, is your score in the neighborhood of that? आप उनकी हर मैच खत्म होने के बाद सुनिए, वो तो 100 पे लड़ने वाले हैं. वो उनकी बात सुनिए, वो हर मैच के बाद ये कहते हैं कि इतना पार स्कोर था, हमने 10-15 फालतू बना लिए. तो वो क्या होता है, जब आप ऐसी बात करते हैं ना, तो इसका मतलब आप ऐसी बात ड्रेसिंग रूम में भी करते हैं, आप ऐसी बात हर्डल में भी करते हैं, आप ऐसी बात प्रैक्टिस में भी करते हैं, तो फिर वो आपकी एक मानसिकता बन जाती है. बस इतने बोर्ड पे लग जाएं बहुत है हमारे लिए. तो आई थिंक उस तरीके का उन्होंने एक माहौल बना लिया अपनी टीम के अंदर. और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सबा, यहाँ पे अगर 140 से ऊपर ऐसे मैच के अंदर जो बिल्कुल आपका नॉकआउट गेम है, प्लस इस ग्राउंड के ऊपर उतने ज़्यादा रन बने नहीं हैं, आप स्पिन इतनी अच्छी खेलते नहीं हैं, दूसरी तरफ जो गेंदबाज हैं वो स्पिनर के अलावा जो उनके फास्ट गेंदबाज हैं वो भी बहुत अच्छी चेंज ऑफ पेस उनके पास है, तो वो इम्तिहान होगा. अगर 140-145 से ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान ने बना लिया तो बहुत अच्छा खासा इम्तिहान साउथ अफ्रीकन टीम का होता हुआ नजर आएगा. 145 मैच विनिंग स्कोर हो सकता है. ये पिच बदलेगी या फिर वैसे ही लगता है? ये तो नाइट गेम है ना, ज्यादा परिवर्तन होना नहीं चाहिए. ये अंडरलाइज अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अंडरलाइज से विकेट ज्यादा अच्छा खेलता है या फिर पहले जो बैटिंग करें उनके लिए अच्छा होता है, पर टीम्स तैयारी करती हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से. इस समय दोनों टीमों को मुझे लगता है, यही लग रहा होगा कि पहले बैटिंग करना ही उचित है. और अफगानिस्तान के पास ज़्यादा विकल्प है नहीं. उनको मालूम है कि वो अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं, जब उनके ऊपर दबाव बनता है तभी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. और इसीलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कुछ नया करते हैं एक्स्ट्रा यार्ड में. आज एक मैचअप भी पूछ लेते हैं, मैचअप दैट यू रियली वांट टू सी टुडे. अब जब शुरू में है तो फिर आप गुरबाज की तरफ नजर डालेंगे कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. गुरबाज के सामने रबाडा ने कोई इतना खास किया नहीं है इस टूर्नामेंट में, और रबाडा जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं और जितने समय से रबाडा के साथ अच्छी बॉलिंग की है ज्यादा. हाँ, और पुरानी गेंद तक आते आते काम कई बार हो जाता है. तो चलिए, इतना मैचअप है तो नहीं, लेकिन मैं रबाडा वर्सेस गुरबाज जाता हूँ. स्पिन की ओर देखना चाहेंगे आप? या राशिद खान वर्सेस हेनरी क्लासन फॉर मी, बिग टाइम. सो अगर आप 19 नॉट आउट ले लें, अगर साइड में रख लें जो हेनरी क्लासन ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद हर दूसरे इनिंग्स में वो 20 रन तो पार कर रहे हैं. इसीलिए तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो, खासकर कैसे विकेटों पे जहां पर जनरली बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. और हेनरी क्लासन वो मध्य क्रम मिडिल ऑर्डर की एक प्रकार से वो बैकबोन रहे हैं. और दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स को भी या फिर टीम को विश्वास है कि इतने बड़े मैचेस, अब सबसे बड़ा काम क्या है कि जब नॉकआउट मैचेस आ रहा है, जब दबाव बढ़ता है, वहां पर आप परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं. और अगर आपके पास आपके अंदर चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो गए, हेनरी क्लासन हो गए, एडन मार्करम हो गए, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनकी कोशिश यही होगी कि वो चौकस का टैग इस बार फाइनली हट जाए, तब तो इन्हीं प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा ना, नहीं तो फिर क्या फायदा है खेलने का. और एक और चीज़ है क्लासन के बारे में, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट ने उनका इस्तेमाल किया है ना, एक नंबर पे बैठा के नहीं रखा है कि 5 या 6 ही खिलाएंगे, उनको बैटिंग में प्रमोट भी किया है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. ऑलराइट, सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. The big question still remains, can Kandahar, Khost and Kabul, places like these, get another reason to celebrate, or is it going to be the South Africans finding themselves in the grand finale for the first time ever in the T20 format too? Let's find out. It's Afghanistan who won the toss and decided to bat first because they backed themselves to put the runs on the board. And let's see if that comes true as well and they can restrict the opposition in South Africa. You've been watching The Narrative, a T20 World Cup special brought to you by Times of India. We'll meet you at the mid-match show.